हाँ नमस्ते। बहुत ही मेरे ख्याल अच्छा प्रयास है मेरे ख्याल मोदी की तरफ से कि मतलब पशु को लेकर एक नई तरह का प्रयास किया उन्होंने। आप इसके बारे पशु को लेके मतलब आई थिंक पशु बोलना ही नहीं चाहिए। अगर प्रयास है तो पशु के प्रति एक ह्यूमन अप्रोच बहुत ज़रूरी है। जी तो वी हैव जस्ट ह्यूमनाइज द होल थिंग। पहले पशुओं को सिर्फ पशुओं की तरह देखा जाता था। जानवर मतलब एक गाली समान था, और किसी को अगर गाली देनी थी तो आप कहते थे जानवर की तरह बिहेव मत करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त बदला है, बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। सिर्फ जो समीकरण है वो औरतों और मर्दों के बीच में ही नहीं बदला है, बल्कि जो समाज में जितने लोग हैं और जितनी तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो पशु पक्षी जानवर हो, सबके साथ इक्वेशन हमारा बदल गया है। और एक ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी बर्ताव उनके प्रति अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और मुझे खुशी है कि इतने लोग इस जज्बात को अब समझने लगे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये जो उमंग कुमार का ये जो प्रयास है, दैट एनिमल्स मैटर टू मी, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है, जहाँ आप जानवरों को जानवरों की तरह नहीं देख रहे, एक प्राणी की तरह देख रहे हैं। जैसे इंसान एक प्राणी उसी तरह देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में जो जिंदा है और जो सांस ले रहा है वो सब बराबर हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी वो भी एक जीव हैं। तो जितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हालांकि वातावरण जिंदा नहीं है, लेकिन आप वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो हर के प्रति एक एटीट्यूड जो है वो बदलने की बहुत ज़रूरत है। वो बाबा आदम के ज़माने से जो एटीट्यूड चला आ रहा था उसको बदलने की सख्त ज़रूरत है। और वो प्रयास जो है भले ही कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पूरा समाज, एक पूरा समूह शामिल हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें गति और प्रवाह है। बेहद ही उत्तम विचार सर आपका। ये मतलब इतनी अच्छी से आपने ज्ञानवर्धक बात की है सर। बहुत शुक्रिया। और मैं पूछने के लिए छोड़ा ही नहीं आपने मतलब। और देखिए, अब मैं हमेशा इसलिए आता हूँ पार्टी में कि सब जर्नलिस्टों का काम आसान कर दें। मुझे खास इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप सवाल ना पूछें, बस जवाब सुने। और इतने सारे सवाल पूछने की भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मसला जो है, मुद्दा यही है कि एनिमल्स मैटर टू, ऑफ कोर्स, एंड इट शुड हैव मैटर लॉन्ग अगो। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर। अब से जो ये प्रयास शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में, और ऐसे कुछ लोग थे जो जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे इंसानों के साथ, वो उनके साथ सोते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ जानवर थे। लेकिन अब वो जो एक सोच में, मनोवृत्ति में एक बहुत गहरा जिसको का पैराडाइम शिफ्ट आया है, जहाँ सब अभी बराबर हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इट्स अ ग्रेट मूव। एक दूसरी बात है कि अवार्ड सीजन मतलब आने वाला है अभी। जी, अवार्ड सीजन लेकिन आपको मिलेगा अवार्ड, द यंगेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फ्रेश फेस। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो खरीद लेंगे। जी हाँ जी, या आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको बेहतर मालूम होगा मुझसे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिकाऊ नहीं है आज की दुनिया में? सब बिकता है। इंसान बिक रहा है तो अवार्ड तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटा सा किस्सा है, वो आप सुन लें कि अवार्ड किस तरह से। और वो एक इंसान जो अवार्ड बेचता था, ये इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन जो हर साल होता है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये शख्स जो थे, वो जितने नॉमिनेशंस होते थे ना, 5-5 हर कैटेगरी में, तो हर के पास जाता था। वो कहता था मैं आपको अवार्ड दिला दूंगा, 2 लाख रुपए लगेंगे, और अगर नहीं मिला तो पैसे वापस। अब उन 5 में से एक को तो मिलना था, बाकी सबका वापस कर देता था, और जिसको मिलता था उसको लगता था इसी वजह से मिला, वो बेचारा चुपचाप रहता था। ऐसी कितनी कैटेगरीज मल्टीप्लाइड बाई 2 उतने पैसे वो बनाता गया। बोले इतने बेवकूफ़ से खरीदते गए, उनको ऐसा लगता है खरीद रहे थे, सबसे पैसे बनाता गया। बाद में कहा भी बहुत हो गया, खुद ही आके उसने कबूल कर लिया। पर अवार्ड्स फिक्स किए जाते हैं, ये तो मालूम ही, इसमें कोई इतनी हैरत वाली बात नहीं है। अरे क्या कह दिया आपने, तो इट्स ब्लास्फेमी। ऐसा नहीं, अवार्ड बिकते हैं, अवार्ड अरेंज किया जाते हैं, अवार्ड फिक्स होते हैं। हाँ जी, अब ये इट्स हिज डे। अब शेखर सर नहीं, अब उमंग सर हमारा हो गया। हाँ हमारा नहीं, आपकी शुरुआत है। ओके,
Kumar was appreciating about you. Can you just tell us your association and the cause of being over here tonight? Well, I've had the opportunity to meet Mr. Umang sir at very few occasions actually. He's been the art director of Star Screen Awards as well. That was the first time I met him. So that was the first time I met him. Then I've had the chance of meeting him at his office at my house and discussing various scripts, and very soon hopefully we should work together. So yeah, looking forward to that day. बहुत ही एक्टिव हैं आप इसको कैलेंडर से जोड़ने के लिए और इसका लॉन्च करने के लिए. I think खासकर क्योंकि जो cause है, जो initiative है, I really salute Mr. Umang sir for doing this, because for animals I'm just going to do everything in my power to help, and what better way to do it through Mr. Umang sir's initiative. He's a major ardent fan of animals. Yes. So everyone who is associated with animals, we welcome. And he was gracious enough to come over here. Yeah, Thank you. Thank you, sir. Thank you. And it's something like a passion that we want everything and everyone to be attached. These are all hand painted by us, and and we're auctioning the original paintings also. As much money raised is good. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Tiger, आप like you also have an inclination towards painting. Not really, sir. I'm not very artistic. Animal lover. बहुत yes. yeah, I'm an animal lover. If you ask about art, I'm not very talented. Anything specially would you like to say about this calendar जो आप कहना चाहेंगे, अगर कुछ specifically अगर आपने देखा हो? Well, I've just seen this drawing so gonna far, be and this is inaugurated fantastic. inside, so- अभी जाके देखूंगा सर, उसके बाद बता दूंगा आपको. Thank you. जैसे कि लोग फॉरेस्ट को काटते हैं, डर्टी फॉरेस्टेशन होता है, एनिमल्स लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, लोग फॉरेस्ट में जाके रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? I mean, it's obviously a very sad issue. It's obvious that it's something that's happening. It's बहुत rampant है all over the world, and I think we should do our part to plant a tree wherever we can. So, Thank you guys. Thank you everyone for coming over here for a special cause. And believe me, whoever's come here, this guy sends an ambulance or personally comes at 2 o'clock in the night, picks up the animal, goes and they have in-house doctor Ankita, and they do a selfless job. And we were grateful enough to, I was grateful enough to ye aaye hamare paas. And I know there are faces over here who have been associated with him for so many years, and I appreciate that. So this was a very small gesture from our part. Okay, he's doing something for Poland, for about 19 acres over there, and इतना बड़ा काम कर रहा है यार, अकेला बेचारा कितना काम करेगा? Somebody's obviously everybody's putting in their money. He just came to me कि, boss, can you do something for me? Because you've been in advertising, you've been an art director, तो कुछ एक डिजाइन कर लो कैलेंडर. ऐसे लोग तो मैं डिजाइन करूँगा कैलेंडर तो यार वो तो छोटी बात होगी, मतलब 2 मिनट में हो जाएगा, क्या करेंगे? Something more has to be done, has to be talked about now. So okay, all these paintings are one painting each for 1 month is of rescued animals. Okay, उनका एक नाम है, there are sweet characters, and I've just put a little jewelry on them to bejewel them and make them a little special. They are so special. I wanted to put an heart and soul over here. We'll unveil this, you see it, and obviously we're going to auction these paintings. But I must say, 8 are already sold. So thank God for that. I need a complete setup over here tonight. But before going ahead, I just want to call the man of the hour right now for us. I don't know what to say. सबसे पहले मैं thank you कहना चाहूँगा for inviting me, for supporting this Jubilee initiative by you, sir. ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस यही बोलूँगा कि I'm very thankful to be a part of this, and whenever I see a stray or anything on the road, now I remember I can just give you a call, and I know he's going to be in the best hands. He or she's going to be in the best hands. So thank you so much for doing this, and thank you so much for helping animals. Thank you. I've had a few actually, and I actually own a few stray animals. Really? I keep them at my building actually. My father doesn't allow me to keep pets in the house, so I just keep them downstairs in the building. So he roams around freely in the gardens and all. So I have a few dogs. So what would you say to all those people who don't think about animals, who don't think about these stray dogs, who are injured, जो बीमार रहते हैं, सड़कों पे हमें नजर आते हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे?
I wish I could just, tell them that if you save the animal, I'll give you my number and you can contact me, but I can't give them my number. But, every one of us can help make a difference, it doesn't mean you have to adopt him and take care of him, it's just, a matter of few hours. If you can just make a difference in that animal's life, it will be a huge thing, it will be a great thing. Thank you so much. Also, what would you like to say to those people? आपने देखा होगा कई बार जानवरों को लोग या कुत्तों को ऐसे लोग पत्थर देखते हैं for no reason. You see them injured. What would you say to such people? I don't know. I mean, it doesn't really. That just goes to show that I just feel animals are always, a higher species than us humans. I truly believe that, and that's a very sad thing that that people do that. So I don't know. I'm speechless. I don't know what to say to those people. So you believe that animals should matter to all of us? Absolutely, yeah. We ourselves are animals. So, it's all about just getting along, and we are, we are one big family. So one last question. What would you like to say to your dad who doesn't allow you to... Your dad say panga nahi le sakta hu, so I don't think I can tell him anything. He is the tiger of the house, and he is the tiger of the industry, so I don't want to mess with him. Thank you so much, and I would like to invite you to please launch our calendar along with Ganesh Naik and Shobhan Kumar. Like you see, every kid has a name, and that's how the beauty comes in. And that's how we just done a little special for each and every kid over here. My wife is with us. Sundari. So, right now, just to unveil, these are 6 paintings that we are reading right now. And I would request, because I know your... Hey, camera. Hey, Shiv! Yeah! These are the original paintings which we are auctioning right That now. tapli there? Sold already. This is still there. This is bought by Alvira and Salman. This is already sold. Huh? Yeah, that's where she bought this. This is David. This is David and somebody already auctioned right now for this. So thank you. And we'll see if somebody overbids it. Otherwise this remains. He's still there, Priya. Small little fellow. He's still there. So these are the 6 paintings right now, and we'll slowly unveil the others. And thank you. Tiger, what did you think after seeing these paintings? In fact, people have been wondering and asking, these are actually people. A lot of people think they're actually photographs. They can't believe that Umang is actually hand painted, isn't it? How much I have to descend them, नहीं बाबा हाथ से पेंट करके, नहीं बाबा देखना है तो देखो. I mean, in fact, just for 2 minutes. Proof चाहिए. रुको, ये भी लगाओ please. चलो वहाँ देखो. मेरे हाथ में ब्रश है. एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ. So there are 4 more to go. 4 more paintings to be sold. And we're complete sold out. Sell out tonight. So please help this cause. Thank you, Tiger, and for coming over here and honoring every guest over here. Thank you. You're silently appreciating the work and donating Ganesh for so long. I thank you all from my bottom of my heart, and thank you for coming. Kapil sir, thank you. There is Shamak over there.
there's Vivek, there is who all? I mean, they all are, animal lovers, and I love them. Thank you for coming. Shekhar ji, thank you. Taran ji, thank you. And Shamak, you're going to buy one right now. I know that. Yeah. No, I know. I mean, he said, I'm coming. He's left something. Done. No problem. Done. Done.